असली सेवा पिछली अव्यक्तवाणी में बोला अफ्रीका ने शुरू की है। It was said in the previous Abhektvani, Africa has started the real service. इतने सालों से बेसिक में सेवा होती चली आई। Service in the basic knowledge has been going on for so many years. कोई ने प्रोजेक्टर किया, कोई ने प्रदर्शनी की, कोई ने मेले मलाखड़े किए, कोई ने कॉन्फ्रेंस की, कोई ने मेगा प्रोग्राम किए, कोई ने लिटरेचर का किया, कोई ने क्या किया। Some served through projectors, some organized exhibitions, fairs, conferences and mega programs. Some distributed literature and some did something else. लेकिन असली सेवा किसने नहीं की? किसने की? अफ्रीका ने की। फिर बोला जैसे अफ्रीका ने किया। However, no one did the real service. Who did it? Africa did it. Then it was said, just as Africa did it. क्या किया? What did it do? है? क्या किया? What did it do? Student, service. ये बोला It was said, बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई देश नहीं रहा हुआ है। Bap Dada heard that there isn't any country left in Europe either. यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ कोई विशेष देश नहीं रहे। There isn't any particular country left in Europe and Africa. ऐसे सब तरफ होना चाहिए। The same kind of service should happen everywhere. संदेश तो पहुंचे ना, किस बात का? At least the message should reach them. About what? है? कि भगवान बाप आया हुआ है। Student, Baba has come. God the Father has come. संदेश तो पहुंचे। At least the message should reach them. नहीं तो उलझने बहुत मिलेंगे। Otherwise, you will receive many complaints. क्या? What? दुरापा देंगे। अरे भगवान साकार में सृष्टि पर आया और तुमने हमको नहीं बताया। They will complain. Arey, God came in a corporeal form in this world and you didn't tell us. ये काम किसने किया अभी? Who performed this task now? है? अफ्रीका ने किया। Africa performed it. और किसी ने नहीं किया। No one else performed it. सब लेना देंगे, हमारा बाप आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं। Everyone will complain. Our father came and you didn't even tell us. तो उलझना नहीं रह जाए। So, there shouldn't be any complaint. No matter where you stay, you should think, in what way should we make such planning so that the task of giving the message is completed soon. Avyaktvani 29th June 1971, page 121, end. The sands of time are running out. Time is flying by the day. A second lost never returns. There are 195 countries in such a big world. There is a population of 550 million. But they haven't been able to deliver the message of the Father, even in the whole of India yet. सेवा का चांस अभी है। The chance to serve is now. आगे चल करके सेवा करना चाहेंगे तो भी चांस नहीं मिलेगा। क्यों? In the future, even if you want to, you won't get a chance to serve. Why? है? अभी शांति का टाइम है। Now it is a peaceful time. आगे चल करके अशांति का टाइम, मारामारी का टाइम हो जाएगा। In future, it will be a time of restlessness, of fighting. तो आगे चल करके सिर्फ मनसा सेवा का चांस रह जाएगा। So in future, only the chance of service through the mind will be left. वाचा की सेवा या भागदौड़ की सेवा फिर नहीं कर सकेंगे। You won't be able to do service through speech or the service of running here and there.
इसलिए संबंध संपर्क की सेवा और वाणी की सेवा करने का चांस अभी है। This is why you have a chance to serve through relations and contacts and to do the service through words at this time. जितनी सेवा कर सको उतनी डबल ट्रबल करो। Do double or triple service as much as possible. लेकिन अभी समय के प्रमाण एक तो अपने अपने एरिया की आत्माओं का रहना पूरा करो। But now, according to the time, one thing is fulfill the demands in the complaint of souls in your own areas. जहाँ सेंटर की एरिया होती है वहाँ आसपास भी मेहनत करके सभी को सिर्फ संदेश नहीं दो। Within the area of the center and the areas around it, don't make effort to just give them the message. लेकिन बाप दादा से कम वर्षा तो दिलाओ। But at least enable them to obtain their inheritance from Bap Dada. ऐसा उलहना नहीं हो They shouldn't complain. कि बाप आया और इतने नजदीक होते हुए भी हमको बाप से वर्षा दिलाने में वंचित कर दिया। The father came and they were deprived of obtaining the inheritance even on being so near. तो अभी चारों ओर ये सेवा जल्दी जल्दी करो। So now, do this service everywhere soon. और ये सेवा जल्दी जल्दी पूरी होनी चाहिए। In addition, this service should be completed soon. कोई एरिया, कोई गांव, कोई कॉलोनी वंचित न रह जाए। No area, no village, no colony should be left deprived. हर एक अपने जोन के कल्याणी तो बनो। कम से कम जोन में कोई तो वंचित न रह जाए। Each one should at least become a benefactor for your own zone. No one should be left deprived, at least in your zone. ऐसा प्लान हर एक जोन मिलकर के बनाओ। फास्ट सर्विस करो। Each zone come together and make a plan. Do fast service. सेवा की सीजन बनाओ। Create a season for service. वंचित आत्माओं को थोड़ा बहुत बाप के प्यार की अंजलि तो दो। Enable those deprived souls to receive at least a fraction of the Father's love. बाप दादा तो लोगों के दुख की आएं सुनते हैं। Bap Dada indeed hears the cries of people's suffering. जब आत्माएं बच्चों के दुख की आएं बाप को सुनाई देती हैं। When the Father hears the cries of sorrow of the souls of the children, इसके दुख की आएं हैं? the cries of whose sorrow? उनको बताओ Tell them. कि बाप को तुम्हारे ऊपर कितना तरस पड़ता है। See how much mercy the Father feels for them. आप भी तो रहमदिल आत्माएं हो ना। You too are kind-hearted souls, aren't you? रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हो। Are you the kind-hearted children of the kind-hearted Father? कल्याणकारी आत्माएं। The benevolent souls. अभी दुखियों का आवाज सुनो। हे विश्व कल्याणी आत्माओं। Now hear the sound of the unhappy souls. O world benefactor souls, विश्व की आत्माओं का कल्याण करो. bring benefit to the souls of the world. No matter how busy someone is with their official work, whether someone looks after the kitchen or does farming, but after belonging to the Father, everyone should know how to give the introduction of the Father. It is because the Father has given us the very name Shiv Shakti Pandav Sena. This is why it is necessary for everyone to practice imparting knowledge. बाबा ने तो यहाँ तक बोला है, पक्का कर देना चाहिए, जब तक हम दो चार आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाई देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे. In fact, Baba has even said, you should make it firm that unless you narrate knowledge to 2 to 4 souls, you won't have food. अब जो करेगा जो पाएगा. Now the one who does will gain. पहले तो 10-15 को रास्ता बता करके फिर पीछे भोजन खाना चाहिए. You should certainly show the way to 10 to 15 souls first and then have food. पहले शुभ काम करके आओ. Perform this good deed first. इसमें तुम्हारा अपना ही कल्याण है.
There is your own benefit in it. It has been said in the Bhagavad Gita, the donation of knowledge is especially better than the donation of physical things. The one who donates never becomes destitute. His wealth keeps increasing. This is why it is said, Dhan diye dhan na khute. Wealth doesn't exhaust by donating it. Here also, the more someone donates knowledge, the more he thinks and churns. But you don't have to gather just subjects by giving them the message. You have to bring up the air-like souls as well. You have to work hard to explain every person individually. माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुषों की सेवा करें. Mothers should serve the mothers with knowledge. Men should serve men. कोई मना है क्या? Is it restricted? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं. Mothers can do the same service that men do. माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए. Mothers and maidens should serve the mothers and maidens. भाइयों की सेवा करनी चाहिए. Brothers should serve the brothers. तो जहां भी समझाने की मार्जिन है तो तुम बच्चों को भागना चाहिए. Wherever there is the chance of explaining, you children should run there. जिनको सर्विस का शौक होगा वो भागेंगे. Those who are fond of service, they will run. वो ये कब नहीं कहेंगे कि इतना दूर हम कैसे जावे. They will never say, how will we go so far? बाबा कहते हैं सर्विस के लिए भले खर्चा करना पड़े, कोई हर्जा नहीं है. Baba says, it doesn't matter even if you have to spend money for service. ऐसे नहीं, ये तो बहुत दूर है. It shouldn't be that you say, it is very far. 8-10 माइल दूर है. It is 8 to 10 miles away. सो क्या बात हुई. So what? ट्रेन से भी भाग जाना चाहिए. You should run there even by train. खर्चे का ख्याल नहीं रखना है. You don't have to worry about the expenditure. बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए. The children need to be fond of service. सो भी जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए. Moreover, the unique children should be very fond of service. ये अहंकार नहीं हो कि हम तो महारथी हो. They shouldn't have this ego. I am certainly Maharathi. That is a great warrior. अरे महारथी हो तो भागते रहना चाहिए. Arey, if you are a Maharathi, you should keep running. खाना भी वहाँ सर्विस पर जाकर खाना चाहिए. You should go and even eat there at service. बाबा अच्छी तरह से जानते हैं बहुतों में देह अभिमान का रोग है. Baba knows very well. Many have the disease of body consciousness. थोड़ी सी महिमा होने से ढीले पड़ जाते हैं. They become slack on being praised a bit. नहीं तो सर्विस से खूब चक्कर लगाते रहना चाहिए. Otherwise, you should go around for service a lot. ऑफिस का टाइम पूरा हुआ और भागा सर्विस पर. As soon as the office time is over, you should run for service. थोड़ा बहुत तो खाया और ये भागा. Eat a bit and run. यहाँ भी बच्चों को सर्विस के डायरेक्शन मिलते रहते हैं. Even here, the children keep receiving directions for service. बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं. Baba is giving directions. जिनके मन में आता है हम अपने सेंटर का करें, Those who have in their mind that they should do for their center या फलाने की सर्विस करें, or do the service for a particular place, ये अपना अपना सब देहभान है. this is everyone's own body consciousness. ऐसा देहभान नहीं आना चाहिए. You shouldn't have such body consciousness. बल बाबा जानते हैं होता तो ड्रामा अनुसार ही. Though Baba knows that it certainly happens as per the drama. फिर भी बाप का काम है बच्चों को आगे के लिए चुस्त बनाना. It is the father's task to make the children active for the future. अभी तो बच्चे बहुत सुस्त हैं. Now the children are very slack. नहीं तो बच्चे चुस्त हो जाएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं. Otherwise,
If the children become active, they can do very good service. ज्ञान मार्ग में आराम पसंद नहीं होना चाहिए। You shouldn't be comfort loving in the path of knowledge. सर्विस पर कब नींद करते हैं क्या? Do you ever sleep at service? दुकानदारी खूब होती है तो नींद आती है क्या? If your shop runs very well, do you feel sleepy? तो इसमें भी नींद क्यों आनी चाहिए? So why should you feel sleepy in this as well? यहाँ तो बहुत नींद करते हैं। Here they sleep a lot. कहते हैं सर्विस ही नहीं। They say there is no service at all. सेंटर पर तो बहुत सर्विस है। There is certainly a lot of service at the center. सर्विस पर होते अगर नींद करते हैं If someone sleeps at service, तो बाबा समझते हैं ये आराम पसंदी और देह अभिमानी है। Baba understands that he is comfort loving and body conscious. सभी को सर्विस पर भागते रहना चाहिए। Everyone should keep running for service. ईश्वरीय सर्विस की खुमारी हो। You should have the elation of Ishwariya service. बाप को भी खुमारी है, हम जाकर के बच्चों को पावन बनाऊं। The father also has the elation. I should go and make the children pure. ये है बेहद के सर्विस की खुमारी। This is the elation of the unlimited service. तो बच्चों को भी बेहद की खुमारी रहनी चाहिए। So the children should also have the unlimited elation. कल्प के बाद तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको ये जो सर्विस सिखलाते हैं, You children know after a cycle the service which the father teaches us. इस सर्विस से तो बहुत तकदीर जागती है। We earn a great fortune by it. तो मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो सारी दुनिया के विपरीत हैं। So the main topics are opposite to what the entire world says. जो बताई It was said, गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। God of the Gita isn't omnipresent but ekvyapi, that is present in one. ये सृष्टि चक्र का ड्यूरेशन 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। The duration of this world drama wheel is 5000 years and not lakhs of years. मनुष्यात्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। Human souls don't go into 8.4 million species, that is 84 lakh species. सिर्फ 84 के चक्र में आती है। They come in the cycle of just 84 births. गीता का भगवान शिव है, Shiv is God of the Gita. जिसे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। He is called Shiv Shankar Bholanath. वो कोई कृष्ण बच्चा नहीं है जिसकी बैठे पूजा करते हैं। He isn't the child Krishna whom they sit and worship. कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। Krishna certainly has a childlike intellect. राम बाप को कहा जाता है। The father is called Ram. शिव निराकार है। Shiv is incorporeal. वो निराकार जरूर कोई साकार रूप धारण करके आता है। That incorporeal one certainly takes on a corporeal form and comes. और मुकर्रर रथ में आता है। In addition, he comes in the permanent chariot. तो ऐसी ऐसी मुख्य मुख्य बातें जो सारी दुनिया के विपरीत हैं, वो बातें तुम बच्चे ही समझा सकते हो। So, you children alone can explain such main topics which are opposite to what the entire world says. और तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। No one else has them in their intellect at all. टेंट का भी प्रबंध करे और अपनी कार का भी प्रबंध होवे। Someone should arrange for a tent as well as a car. जिसमें प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि और टेंट रख करके फिर गांव-गांव में देश देशांतर में जाकर के सर्विस कर सके। In which the exhibition, projectors, etc.
and the tent can be carried and taken to every village in the country and abroad to do service. सैंपल एक बनवाओ। Have a sample made. क्या What? क्या करो? What should you do? एक सैंपल बनवाओ, Have a sample made. फिर 6-8 भी बनवा लेंगे। Then we will have even 6 to 8 samples made. तो 1 और 8 मिलकर के कितने हो जाएंगे? So 1 and 8 will add up to make how many? 9 सैंपल तैयार हो जाएंगे। 9 samples will be ready. और मोटर भी ऐसी हो जिसमें ये सब सामान रख भी सकें। And the motor car should also be such in which all these things can be carried. तो फालतू पैसे हैं खाने पीने से अलग, तो क्या करो? है? So, if you have excess money left from eating and drinking, what should you do with it? अखबार में डालो। You should publish the message in the newspapers. तो सभी सुने तो सही कि ये क्या कहते हैं। Let everyone at least listen to what you say. ऐसी युक्ति से लिखो, ऐसे नहीं सीधा सीधा। Write it with such a tactic. You shouldn't write it straight away. भगवान आया हुआ है, God has come. दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं, तो थप्पड़ आते जाओ। The world is about to be destroyed. Atom bombs are ready. You shouldn't keep slapping them like this. अरे हम इतना बड़ा बड़ा कारखाना बना के बैठे हैं। Someone will say, Arey, we have built such big factories. इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने बना के रखी है, हम किराया हमें मिल रहा है लाखों रुपया, और ये कहते हैं दुनिया का विनाश होने वाला है। We have built such big buildings. We have built multi-storied buildings and we are earning a rent of lakhs of rupees. And these ones say that the world is about to be destroyed. तो नाराज हो जाएगा। He will be displeased. तो युक्ति निकालो, ऐसी युक्ति से लिखो जो समझ जाए। So, come up with some tactic. Write with such tactic that they understand. बाकी पैगाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। As for the rest, giving the message is not a big deal. कोई इंग्लिश में दे, Some should give it in English, कोई हिंदी में दे। some in Hindi. हिंदी के भी अखबार हैं, अंग्रेजी के भी अखबार हैं, हिंदी में देंगे तो हिंदुस्तान के सब लोग पढ़ेंगे। There are newspapers in Hindi as well as English. If you give it in Hindi, all the people of Hindustan will read it. इंग्लिश में देंगे तो सारी दुनिया की समझ में आवेगा। If you give it in English, the entire world will understand it. हाँ, कोई अखबार वाले तुमसे पैसा लेंगे, कोई पैसा नहीं लेगा। अगर अखबार वालों को तुमने समझा लिया युक्ति से, तो बिना पैसा लिए ही अखबार में तुम्हारा पैगाम डाल देंगे। Yes, some newspapers will take money from you, while some won't. If you explain to the publishers tactfully, they will publish your message without taking money. हर हालत में पैगाम पहुंचाना है। You have to convey the message in any condition. क्या What? दुनिया में पैगाम सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? Should everyone in the world receive the message or not? मिलना चाहिए, नहीं तो ये कहेंगे ये क्या? Everyone should receive it. Otherwise they will say, what is this? भगवान आया हुआ है, गॉड फादर। God has come. God the Father has come. सारी दुनिया जिनको मानती है, धर्म पिताएं भी गॉड फादर को मानते हैं। The entire world accepts him. Even the religious fathers believe in God the Father. और हमको पता ही नहीं चला, And we didn't come to know about him at all. तो डोरापा देंगे। Then they will complain. इसलिए सारी दुनिया में पैगाम पहचाना है, खर्चा भी किया तो भी क्या हुआ? This is why you have to convey the message to the entire world. What does it matter even if you spent money for it? इतना बड़ा काम होने वाला है तो खर्चे की कोई बात नहीं। Such a great task is going to happen. There is no worry of expenditure in it. सभी को मालूम तो पड़े ना। Everyone should come to know, shouldn't they? सबसे बढ़िया तरीका है
अच्छी अच्छी स्लोगन्स बनाए जाए एडवांस के। The best way is to prepare nice slogans of the advanced knowledge. और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में छपा के, और जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ जो बस स्टैंड वगैरह हैं, खास खास जगह हैं, वहाँ चिपका दिए जाए। And those nice slogans should be printed on posters and should be pasted on the bus stands, important places around the venue of the program. Want to be tension free? Here's our address. God Shiv incarnates only once in a cycle. Come and understand how the gates of heaven are opening. The time of the Mahabharata war is approaching. Come and understand how the Iron Age becomes the Golden Age again. Come and understand the past, the present and the future of the world. This is the very institution for becoming a deity from a human being. Come and understand how you can attain self-sovereignty. God has come to teach Rajyog, health and wealth for 21 generations. The clinic for health and wealth for 21 births. तो सर्विस ऐसी करनी चाहिए, क्विक सर्विस करनी चाहिए, गीता के भगवान के पर्चे बांटने की। So, you should do such service. You should do a quick service of handing out the leaflets about God of the Gita. जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। Reveal Him with how much ever strength you have. आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। Nowadays, very fast devices have come up. क्या? What? घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। Keep moving your fingers while sitting at home and send message happily to all the Indians who know Hindi and are sitting abroad. दे सकते कि नहीं? दे सकते। Can you give the message or not? You can. तो बताया। So it was said. सेवा और याद। Service and remembrance. ये शॉर्टकट तरीका है। This is the shortcut method. लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है। ओम शांति। Even the one who comes last can go fast through it. Om Shanti. सेवा की बहुत फलक चाहिए। You need a lot of fervor for service. मंदिरों में जाकर के एक एक देवी देवता का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बतलाना है। You have to go to the temples and prove the occupation of each and every deity. तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? So what should the children do now? सर्विस करनी चाहिए। They should do service. जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके पास ले जाना चाहिए और जाकर के रूबरू समझाना चाहिए। You should go to some big institutions and narrate the knowledge to them in person. यहाँ तो अपना घर है, अपने घर में सर्विस नहीं है तो दूसरों के घर में है। Here it is our house. If there isn't any service in our house, there is service in others' house. दूसरी जगह सेवा न मिले, दूसरी जगह न मिले, तीसरी जगह में। If you don't get an opportunity for service in that place, there will be service in a third place. बाहर में कहीं भी सर्विस ही सर्विस है। There is service and only service everywhere in the outside world. गाँवों में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत सर्विस है। If you go to villages, there is a lot of service there. बड़े शहरों में भी सर्विस है। There is service in big cities too. तो वहाँ स्कूलों में भी तुम सर्विस कर सकती हो। So, you can serve in the schools too. और तुम्हारे जो भी टीचर्स होते हैं या तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनको भी तुम समझा सकती हो। You can even explain to all your teachers, professors, lecturers.
ऐसी सर्विस को बढ़ाना है। You have to increase the service in this way. अच्छा बच्ची, अच्छा daughter, सभी ये हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह वो उनको जा करके पकड़ो। go and catch hold of all these people like the health minister, etc. बाप कहते हैं जहाँ भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए। The father says, you should go and do service wherever there is a temple of Lakshmi Narayan, of Shiv, or on the banks of the Ganges. Wherever there is a crowd, you should do service there. संदेश तो जरूर देना चाहिए। You should definitely give them the message. कोई को मेहमान आकर घर में रहते हैं, Some people have guests for a stay at their house. मित्र संबंधी आदि आते हैं, तो बहुत ही सर्विस कर सकते हैं। Their friends, relatives, etc. come to their house, so they can do a lot of service. रेल में भी सर्विस कर सकते हैं, You can do service in the train as well. मंदिरों में, घाट पर, शमशान घाट में सर्विस कर सकते हो। You can do service in the temples, on the banks of rivers, and at cremation grounds. टाइम वहाँ बहुत मिलता है। People get a lot of time there. Do service, but with the support of a connection, not independently. Just like every branch is connected with the trunk, similarly, if you have good connection with the special souls who are instruments, there will be great success. Avyatvani, 14th January 1979, page 217, beginning. और बाबा कहते हैं हर एक डायरेक्शन कन्याओं माताओं के द्वारा निकलना चाहिए। Baba. And Baba says, each and every direction should be given through the maidens and mothers. बाबा कन्या माता है या पुरुषों की कोटि में है? Is Baba a maiden or a mother, or is he in the category of men? तो बाबा कोई डायरेक्शन नहीं देगा आपको अलग। Student replies, so Baba won't give you any separate direction. सारे डायरेक्शन आपको कन्या माताओं के द्वारा मिलने चाहिए। You should receive all the directions through the maidens and mothers. हाँ, वो परमिशन हेड ऑफिस से मिलती है। Student, Baba, we want to do the service of the Muslims. Baba, you receive the permission from the head office. हेड ऑफिस से मिनी मधुबन वालों को मिलती है। The members of the Mini Madhuban receive it from the head office. मिनी मधुबन वालों से गीता पाठशाला वालों को मिलती है। The members of the Gita Pathshalas receive it from the Mini Madhuban. गीता पाठशाला वालों से जिज्ञासुओं को मिलती है। And the students receive it from the people of the Gita Pathshalas. Some points you need to pay special attention to while giving knowledge. Some start giving knowledge while traveling and then become engaged in worldly talks. Instead of giving the father's introduction, they tell them something of their own and listen to some of their knowledge. The loss is that the time no doubt goes waste, and at the same time, the knowledge doesn't have any effect on the listener, but worldly talks affect the narrator. Taking shortage of time into account, try to explain in a nutshell as much as possible. If the person is interested, you can start giving him the course directly. Also, there are pictures depicted in the book, a unique plan. You can explain to anyone by showing them the pictures. Never insult any specific religion or person while narrating the knowledge. Don't describe the greatness of your celibacy or sacrifice. You shouldn't force others for dharna by telling them about the rules first either. You shouldn't narrate knowledge to others by scolding them or by forcing your opinion over them. You shouldn't narrate the knowledge without understanding it yourself or by memorizing it from books or by listening from others. There is no need to narrate many shlokas to show your wisdom.
You shouldn't make the father's introduction difficult, like Valmiki Ramayana. In fact, you have to narrate the story of Ram in the language of the general public, like Tulsidas did. Avyatvani, 14th October 1987, page 84 beginning. No group should be left out, so that they complain, saying, we didn't receive the message. So, there are different classes, starting from the leaders to the people who live in hovels and huts. Giving this knowledge to the topmost educated scientists and even the illiterate, this is also service. So, you have to give the message to all the classes, that is each and every soul of this world. It is such a big task. No one can say that they don't receive a chance for service. Just like the atmosphere of a temple attracts people from a distance, similarly, the atmosphere of the fragrance of remembrance should be so elevated that it attracts souls from a distance, and they think that this is a special place. Always push yourself ahead with the power of remembrance, and along with it also make the atmosphere powerful. The atmosphere of the service center should be such that all the souls come drawn towards it. Service isn't done only through speech, you should also do service through the mind. Each one should think, I have to make the atmosphere powerful. I am responsible for it. Avyatvani, 27th March 1982, page 322 end. If you remain stable in the seed form stage, the seed of the realization of time and the recognition of the Father will be sown in many souls. This is why, sow the seed after stabilizing yourself in the seed form stage and in the remembrance of the seed form. Then see how well and how easily the fruit of this seed grows. Avyatvani, 6th February 1969, page 38 beginning. जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? The more intensely and the more deeply you remember the Father, what will be the result of it? अन्नात् भवति भूतानि. Annat bhavati bhutani. उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी. Living beings in the form of Brahmins will be born through that food-like remembrance. तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा. The gathering of you Brahmins will increase.